News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक। Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investment, borrowing and taxation. We also discuss on economic matters facing the country. Today's topic on Money Matters is Digital Payment Bank. You can send in your queries regarding this topic. Digital Payment Bank on our email ID moneymatters.air@gmail.com. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel. नमस्कार, मनी मैटर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आकाशवाणी के YouTube और अन्य डिजिटल चैनल पर वित्तीय जागरूकता पर आधारित इस कार्यक्रम में आज हमारा विषय है डिजिटल पेमेंट बैंक। इस विषय से जुड़े आप अपने सवाल हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। कार्यक्रम पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं भारतीय वित्त संस्थान की प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल। प्रोफेसर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। Yamini, a warm welcome to you on the program, and just discussing about Digital Payment Bank. The average listener who is part of our public understands about digital payment, but what is a Digi-Payment Bank? Well, if you remember in 2015, the RBI had actually decided to bring about certain payment banks that were there, and it actually gave licenses to about 11 entities to establish themselves as payment banks. And when they conduct these payments through the digital means, they are then called the digital payment banks. The purpose of these particular banks was to be a part of the digitalization flagship program of the government, where they wanted to have the financial inclusion reach out to the small businesses, smaller entities and low household income groups that are there, so as to bring about greater financial intermediation in the overall financial system and creating better liquidity in the overall markets, making it faceless, paperless and cashless. यामिनी, जो अगर डिजिटल पेमेंट की बात के बारे में बात करते हैं तो ये अन्य बैंकों से किस तरीके से अलग है, मेरा पहला सवाल। और दूसरा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आज के समय में इसके मायने क्या हैं? जी, जैसे आपके बैंक्स होते हैं, वो बैंक्स बहुत जगहों पे अवेलेबल हैं आपके अर्बन एंड रूरल एरिया में, पर सारी जगहों पे अभी भी रूरल एरियाज में काफ़ी अनबैंक्ड एरियाज हैं। यूजुअल बैंक्स में आप कोई भी अमाउंट तक का डिपॉजिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ले सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं। पर एक ज़रूरत पाई गई कि जो बहुत रूरल एरियाज हैं और बहुत सारे एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में भी काफ़ी लोग हैं जिनके पास छोटी छोटी इकाइयों में पैसे होते हैं, वो बैंकों तक नहीं पहुंच पाते और अपने पैसे जमा नहीं करा पाते और चेक या किसी और ट्रांजैक्शंस के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस नहीं कंडक्ट कर पाते। तो उसके लिए पेमेंट बैंक्स को लाया गया ये सोच करके कि लोग मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा से या ई वॉलेट्स की सुविधा से अपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें। और जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो किराना शॉप ओनर्स हैं, उनको भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके जिससे पैसे लोग बिना कैरी किए उन तक पहुंचा सके अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट पे। तो ये पेमेंट बैंक्स जब लाए गए तो उन्हें कहा गया कि आप जब आएं तो आप अपना जो सेविंग्स हैं वो 1 लाख रुपए तक इन पेमेंट बैंक में रख सकते हैं। और ये पेमेंट बैंक आपको डेबिट कार्ड की सुविधा देंगे और ये पेमेंट बैंक्स लोन्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्रेडिट कार्ड्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, पर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर अभी देखें तो 4 इंपॉर्टेंट बैंक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। फिनो बैंक है, जैसे एयरटेल बैंक है, आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है आपका, और आपका जियो बैंक है। ऐसे बैंक्स हैं जो पॉपुलर हैं। तो इसका मतलब मोटा मोटी ये समझा जाए कि चूंकि ये जो रूटीन के बैंक्स हैं जिसमें कस्टमर को बैंक तक जाना है, उसके बजाय आपके मोबाइल पर या आपको इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से आप जहां कहीं भी हो, चाहे अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने कंप्यूटर के माध्यम से, जहां पे भी इंटरनेट की सुविधा है, आप बैंकों से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं और गैर नकद जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उसका उपयोग कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, आपको एटीएम की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, कैश निकालने की जरूरत नहीं है। आपको छोटी छोटी सुविधाओं के लिए अपना सिर्फ जो है मोबाइल के द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जिस तरह से आज बहुत सारी चीजें शहर के बहुत सारे लोग अपने टेलीफोन के बिल हैं, अन्य इस तरीके की चीजें हैं, वो आमतौर पर वो कोशिश करते हैं कि वो इस तरह के पेमेंट बैंक के माध्यम से निपटा दें, जिसमें उनको लाइनों से भी बच गए और उनके जो अतिरिक्त खर्च थे वो भी बचता है, समय भी बचता है। तो इस तरीके के बैंकों की सुविधाएं क्या पूरे भारतवर्ष में मौजूद है और आम नागरिक के लिए, या इसके लिए कोई अभी भी इसके लिए भी कहीं आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या कहीं लॉगिन बनाना पड़ेगा? थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जी, जब आप पेमेंट्स बैंक के अंदर जाते हैं तो आपको अपना अकाउंट खोलना होता है। जैसे सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं या करंट अकाउंट खोल सकते हैं। आप ई वॉलेट्स के द्वारा भी लॉगिन करके अपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बड़े सारे डिजिटल मोड्स हैं जिसके जो बैंक के आपके अकाउंट्स के साथ रिलेटेड होते हैं और ट्रांजैक्शंस परमिट करते हैं। ऐसे ही आप अगर पेमेंट बैंक्स के अंदर अपना अकाउंट खोलना चाहें और सेविंग्स रखना चाहें तो वहां पे भी सेविंग्स की सुविधा आपको मुहैया कराई जाती है। एक छोटा सा सवाल और, जिस तरह से बैंक में अगर हम चेक के माध्यम से जब कोई ट्रांजैक्शन करते थे तो अगर वो उसी शहर का होता है तो तकरीबन 3 दिन का समय लगता है, तो इस तरह से डिजिटल पेमेंट में क्या समय लगता है? जी, ये समय कम से कम लगता है और उसी समय हो जाता है। रियल टाइम ट्रांसफर्स हैं और वहीं उसी समय आपके ट्रांसफर्स आ जाते हैं। जिस तरह बैंक जो आरटीजीएस या एनईएफटी की सुविधा प्रदान करते हैं, ये तकरीबन उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा समय है, लेकिन ये तो इंस्टेंट, अगर कहना चाहिए कि इंस्टेंट ट्रांसफर जो भी लाभ करता है उसके अकाउंट या उसके खाते में पहुंच सकता है। जी, उसके लाभ खाते में पहुंच सकता है और ये बैंक्स आपके आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस की भी सर्विसेज देते हैं। Yamini, the traditional commercial bank is governed by licensing conditions of RBI, which means that they have to provide insurance on deposits. We know there are no deposits for the payment bank system. But what are the securities in place to ensure that the electronic payment that the transmitter has made, if it's not been received by the receiver, the beneficiary of that transaction, then what kind of underwriting is available? Does the payment bank compensate the receiver if they have not received it, or the transmitter? Whenever the transactions actually take place, they are usually, as we say, encrypted and decrypted, giving the entire information from one person to another. And if supposing the information does not reach and the money does not reach the accounts, they hit back to the particular bank and the bank then retransfers it back to your account. So there is a complete facility in terms of whether the transaction has been completed or whether it has not been completed. And the bank is responsible for making that transaction through. So there are IT records maintained by the data center to ensure who the beneficiary is and whether the amount has been received or not. Has it been come back to the transmitter? Apart from that, how does a consumer assess the security features of a payments bank? You spoke about encryption and decryption, because today money is transferred electronically. So cryptography is being used to ensure that it is a secure transaction. How does a consumer take an informed choice based upon the number of payment and settlement banks available? Well, there are licensed entities which are by the RBI, which are identified and which have been operative. So you have, let's say, like Fino Bank, you have Airtel's Bank, or you have India's Post Payments Bank. So these particular banks are licensed and they can actually provide for the opportunities. Besides that, there are certain other avenues through which your e-wallets and certain digital payments can be provided. While making an evaluation, people make evaluations based upon what they are getting in terms of their savings interest which is there. Also, how much amount of money while they transact will be charged by these payment banks, because the entire business model of these payment banks is primarily based upon the fact that whenever you make transaction, a certain amount of a charge goes to them, either from the person, from the merchant from whom you've purchased, or from your as the customer. Since they don't charge the customer, they charge the merchants which are there for these particular payments that are there. So therefore, they tend to earn from there, and that these particular charges make a difference to the customers. और आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक. And you're listening to Money Matters on our News on Air official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID, moneymatters.air@gmail.com.
Today's topic is Digital Payments Bank that we're discussing with Dr. Yamini Agarwal, and tomorrow's topic of discussion is Stand Up India. Let's take up today's topic of discussion, which we are discussing earlier as well, about Digital Payment Bank. Yamini was talking about the secured features of electronic payments, how cryptography is being used, and we're also discussing about how consumers are made aware of the secure features of electronic transactions. Then you spoke about transaction fees. Clearly, there must be a difference in the transaction fee of one payments bank with another payments bank. Why is there a difference? And how do these payment banks actually impose a transaction fee? The payments banks, need to have a link up with the different merchant bankers or with the different merchants which are there, or the other retailers that are there for which you are going to be making transactions, or the payments that are there. So they don't usually charge the customer for making the payments which are cashless. They tend to ask the merchants to make the payments that are there. And they have different methods of actually bringing, or they identify the particular set of rules which they will actually opt for in terms of charging these particular payments. They don't keep it very high because it is the network effect which actually makes an important part of their success in the payments bank, because as more and more people accept it and there are more and more people a part of the network, they get more transactions and they get more money. If you look at the profitability of these payment banks, one, they have been earning on interest, because whatever deposits they receive, they can only invest it in the government securities by the RBI regulations. So they are earning on those particular interest, and the second they earn is on the transactions which are there. So they have booked profits at least on the interest payments which they are having vis-a-vis the interest that they are paying to people for the deposits. But they've not been able to make much of the gains in the transaction aspect as well. Most of these banks, where 4 or more active banks, some of these banks have been booking losses primarily because they're expanding, and they're believing that the economies of scale would play an important role in bringing the growth for them. And as and when more and more people get accustomed to the digital payments, it will add on to the value of the customers which are there and the merchants that are there. So do you believe that the digital payment system is actually a value addition to the prepaid instruments like debit card, because your digital payments are dependent so much on the internet facility? Well, the difference between a debit card and or let's say a digital payment system would be that, it is at the mobile click, so you don't have to really wait for anywhere. With a card also you can do it, but you need a swipe machine and other things. Here you just have it at the click of your button, where you can bring about the transfers, and at any point 24/7 you can actually do that particular transaction. So it does bring about a cashless transfer which is there. Is it dependent upon the internet? It is dependent upon the internet. यानी कि अगर एक आम उपभोक्ता के दायरे से सोचा जाए तो ये डिजिटल पेमेंट बैंक कितने सुरक्षित हैं जो हमारे नॉर्मल बैंक्स हैं उनके मुकाबले, और इसका करने का एक आम उपभोक्ता के लिए तो त्वरित कार्रवाई के अलावा और क्या क्या फायदे हैं जो बैंक्स में उनको फौरी तौर पे नहीं मिल पाते? जैसे अर्जुन ने कहा, क्रिप्टोग्राफी है और आपके एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन है जिसके थ्रू मैसेज आपके जा रहे हैं एक कस्टमर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स को लेकर के और उसके जो ट्रांसफर्स है उसको लेकर के दूसरे मर्चेंट के पास, और जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर है आपके ट्रांजैक्शन के और आपकी जो बैंक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। जहां तक पेमेंट्स की बात है, क्योंकि ये बैंक है, जब ट्रांसफर्स कर रहे हैं आप, तो अगर वो हिट नहीं होती है तो बैंक आपको वापस करेगा। तो क्या ये माना जाए कि इस तरीके के जो ट्रांजैक्शन हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और जिसने भेजा है और जिसके अकाउंट में भेजा है वो ट्रांजैक्शन सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच का एक संवेदनशील मसला है? हाँ जी, उन्हीं के बीच का संवेदनशील मसला है और डेटा ट्रांसफर नहीं होता, ना डेटा शेयर किया जाता है। अच्छा, इस तरीके के बैंकों में अगर कोई राशि जो है वो बैंक्स में अगर रखी जाती है तो जिस तरह से जो जमा खाते होते हैं जिसमें कुछ बैंक ब्याज देते हैं, क्या इसमें भी इस तरह की कोई इनमें भी कुछ सुविधाएं होती हैं जहाँ पे कुछ पेमेंट बैंक्स आपको कुछ इंटरेस्ट देते हैं? लेकिन ये सारे बैंक इस तरीके के जो डिजिटल पेमेंट बैंक हैं वो सारे आपको ब्याज दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। इस तरह की कोई नियमावली अभी आरबीआई के द्वारा नहीं है। The Reserve Bank has also classified PPIs, the prepaid instruments we were earlier talking about, and how are they directly related to digital payments, and what are the controls exercised by RBI to ensure that there is proper payment and settlement in the transaction?
Well, you have the debit cards and you have the credit cards, which we are talking about, and the prepaid systems that are there, and they have been much operative for a very long time. But the success has been very low because there are charges associated with them. With debit cards, people have been more successful because they are account related as against the credit cards. A lot of people like housewives and all do not get credit cards. A certain set of professionals also are not, do not find it easy to get a credit card for themselves. So because of income levels or because of other levels, the credit cards are not made available. Debit cards also have the limit to the extent of whatever you have in your account, which is there. Also, the merchant whom you're dealing with should have the swipe machine, which is there, on which the particular cards can be accepted, and he has to make a particular payments to the other banks. Whereas in the payments bank, there is a lesser amount of a cumbersome process in terms of the payments which are supposed to be made, and anybody can get associated with it just by opening up an account and fulfilling the KYC requirements that are there. Right now, the latest news is that CBDT is to fine businesses 5,000 rupees per day for not using digital payment facilities. This fine is also based on merchants not collecting GST and then transferring it to the government's account. Well, digital payments will bring about a large amount of transparency in the overall system that is there. A lot of people did not report wherever the transactions were happening, whether at a small business level or at a higher level business. But the moment you make the digital transactions active and the bank transactions are there, there is a record of the entire set of transactions, and they can be asked as to why they have not paid the relevant taxes on those particular transactions that are there. So that makes the job of the government also easier, and also for you to know whether you have to make the payments or you're not, so you don't skip any particular payment on which you're supposed to pay tax. So as a consumer, you will always find a vendor with the digi payment facility intact with them. Otherwise, there is inspection by the government to ensure that whether that system is available with the vendor or not. So it's a part of the licensing regulations. Yes, it is a part of the process whereby we are including everybody as a part of the digital system so that they can grow at and make themselves a part of the economic prosperity that is there. जिस तरह की अर्जुन ने भी बताया कि 5,000 रुपए प्रतिदिन का जो सीबीडीटी ने एक फाइन लगाया है, उसके बारे में एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह की कंपनियों पे लगाया गया है जो पब्लिक डोमेन में है और जिनका टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक है. बाकी सारी कंपनियों के लिए इस तरह की मतलब अनिवार्यता नहीं है. What about KYC when it comes to digi payments? I believe if you are transferring less than 10,000, then the KYC is not required, but above 10,000 KYC is required. Well, RBI does make... एक और चीज के साथ मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि आरबीआई ने क्या इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस और भी बनाई है जिसमें अधिकतम अमाउंट की सीमा भी रखी हुई है. डिजिटल पेमेंट बैंक के लिए आप इतना ही पैसा रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, या इस तरह की भी कोई गाइडलाइंस है? और दूसरा, आरबीआई ने क्या ऐसे बैंकों के लिए आम उपभोक्ता के लिहाज से कोई सुरक्षा की गारंटी भी की है? जी, पेमेंट्स बैंक्स जब इनिशिएट किए गए थे या जब लाइसेंसेस दिए गए थे, तो इनका एक पर्टिकुलर अमाउंट 100 करोड़ के आसपास इनके पास कैपिटल होना चाहिए था. इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 15% पे रखी गई है, और आपके जो शेयर होल्डिंग है उसके ऊपर भी लिमिटेशंस रखी गई हैं, और कौन इसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और चीज़ों के ऊपर भी लिमिटेशंस रखी हैं सिक्योर करने के लिए कि कौन ये पेमेंट बैंक चला सकते हैं और कौन जो लोगों से पैसा उठा रहे हैं वो सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम उठा सकते हैं. जहां तक केवाईसी नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है वो आरबीआई ने, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग में ये यूज ना हो और इन पेमेंट बैंक्स का गलत इस्तेमाल ना हो छोटी छोटी इकाइयों में लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए, तो केवाईसी नॉर्म को जो है कर दिया था कि केवाईसी कंप्लीट करिए. तो चाहे वो ई वॉलेट्स के थ्रू था या किसी और के थ्रू, उन सभी बैंक्स को केवाईसी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी. जहां तक लास्ट डेट अब एक्सटेंड कर दी गई है वो 28 फरवरी 2020 है गई है, और तब तक सारी केवाईसी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है. अगर आप ये नहीं करते तो आपका अकाउंट बंद करा जा सकता है. आपका अकाउंट बंद करा जा सकता है और आपकी ट्रांजैक्शंस इनकम्प्लीट की जा सकती हैं. जी, तो मोटे तौर पे अगर डिजिटल पेमेंट बैंक अगर समराइज किया जाए तो ये एक ऐसा माध्यम है जो आप अपने मोबाइल से लेकर, अपने लैपटॉप से लेकर या अपने डेस्कटॉप पे जहां पे इंटरनेट की सुविधा है उससे आप इस तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. आपको सिंपल करना क्या है कि आप अपना एक अकाउंट या अपना लॉगिन बनाना है किसी बैंक के साथ जो इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, उनके साथ जुड़ना है. उसमें अगर आप एक निर्धारित सीमा से ज्यादा करते हैं तो आपको केवाईसी, अपना मतलब कस्टमर को जानो वाला जो कार्यक्रम है उसको पूरा देना है, और आपके जो भी ट्रांजैक्शन इस तरह के माध्यम से किए जाएंगे पूर्णतः सुरक्षित हैं
और अगर कभी गलती से किसी और में आप कर देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन अगर नहीं मैच्योर हो पाते तो वो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। मोटे तौर पे अगर समझा जाए तो ये है। और मतलब जो आजकल का जो त्वरित कार्रवाई का युग है, तो आप पलक झपकते ही अपने मोबाइल से अपने बैंक अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, जिसके लिए कि आपको पहले जैसे किसी बिजली का बिल जमा कराना है, टेलीफोन का बिल जमा कराना है, या छोटी छोटी इस तरह की ट्रांजैक्शन करनी थी, या आजकल ई वॉलेट्स जैसे ई कॉमर्स का जमाना है तो आपको उनको पेमेंट्स करनी है, तो इस तरीके के ई वॉलेट्स का आप इस्तेमाल करें, डिजिटल पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करें, अपना पैसा सुरक्षित रखें, नकदीकरण से बचें, कैश ले जाने की आपको झंझट नहीं करना है। मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो डिजिटल पेमेंट का जो उद्देश्य था कहीं न कहीं सरकार की मंशा में यही था। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों तक जोड़ने का है और कैश को कम करने की सुविधा देने के लिए है। What about savings and investments like mutual funds and insurance schemes? Payment banks in their business model have actually added value in terms of getting associated with telecom companies, right? So you can actually make payments for your mobile, let's say mobile bills. You can also they're distributing insurance products that are there, mutual funds that are there, or any other particular scheme which can be actually sold through that medium, whereby even debit facilities or other facilities are available for those particular deposits which you're maintaining. Similarly, as he mentioned, you have utility bill requirements that are there, right from your electricity bills to your mobile bills to your, other rentals or any particular thing where you have defined payments which are there. You can give an auto debit facility where these particular payments can be made. So for this payment and settlement, are there any other value-added services that the Payment and Settlement Bank provides? Because it is right now in a transitory phase as opposed to a commercial bank which has full facilities to give to its customer. Well, it cannot provide a loan as of now. So all it can do is it can maintain deposits which will actually be, invested only in government securities. They can't invest in any other place. So as far as value-added services are concerned, they can offer you a mutual fund which is there. They can offer you an insurance product that is there. So these are the value-added services, or let's say they can tie up with a telecom company, as I mentioned. So these are the value-added services, nothing more than that. Loans cannot be provided by them, or no credit cards can be provided by them. जिस तरह से हमारे पारंपरिक बैंक हैं, उनमें कुछ सरकारी क्षेत्र के हैं और कुछ निजी क्षेत्र के हैं, क्या इसी तरह डिजिटल पेमेंट में भी कुछ सरकारी से जुड़े हुए हैं बैंक हैं या सारे निजी हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आपका सरकारी है, बाकी आपके निजी हैं। जितने भी हैं वो निजी हैं, लेकिन सब में जो ट्रांजैक्शन है वो सुरक्षित है और आरबीआई सबके लिए ये इंश्योरेंस FDIC है, which is supposed to look after the insurance of the deposits that are there. So for the benefit of our listeners who are also consumers of these type of payment services, shall we make it clear that you cannot make foreign exchange transactions through it? There are no foreign exchange transactions that you can do with them. So there is only a transaction fee for rupee-based transactions. For rupee-based transactions, when you have to make from one account to another. क्या इस तरह के जो ट्रांजैक्शन हैं उनमें जो शुल्क लगाया जाता है, चार्जेस लगाए जाते हैं, इस पे भी बैंक की कुछ गाइडलाइंस हैं या इसके लिए बैंक अलग अलग बैंक अपने अपने खुद शुल्क निर्धारित कर सकते हैं जो कस्टमर या मर्चेंट जैसा आपने बताया कि उनसे वसूल सकते हैं? जी, क्योंकि ये डिजी पेमेंट्स हैं, लोगों तक ट्रांसफर करना है तो उसमें बहुत ज्यादा हाई चार्जेस वो नहीं लगा सकते, काफी कम शुल्क पे लगाना होता है ताकि लोग जुड़े उसके साथ, वरना लोग नहीं जुड़ना चाहेंगे क्योंकि कैश रखना उनको ज्यादा सुविधाजनक लगेगा। And what about third-party payments? Can they be made by using payment bank for that matter, or does it have to be a party in interest? No, third-party payments can be made. As I said, that if you're investing in a mutual fund, you can make a auto debit facility which is there. So third-party payment. Similarly, for your electricity, at the moment the bill hits your account, you can actually make an auto debit facility to that. इस तरह के बैंक, जिस तरह पारंपरिक बैंकों से जुड़ते हैं, कभी उसमें अकाउंट बंद भी कर सकते हैं, तो इस तरह इन सारे बैंकों से भी अकाउंट अपना बंद किया जा सकता है, वो भी उतना ही आसान है जितना जुड़ना? हाँ जी, जितना जुड़ना उतना ही आसान है। आप अपना पैसा निकाल सकते हैं और जो है ट्रांसफर कर सकते हैं जिस भी बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करना चाहें। चलिए यामिनी, हमारे साथ डिजिटल पेमेंट बैंक को इतने सरल शब्दों में, इतने सुविधाजनक शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of tomorrow's topic of discussion on our program, Money Matters. We have Stand Up India. And that's it in this edition of Money Matters today. For now, goodbye.